So this is my first class with you. I'll be teaching you Precis and composition. Let me introduce you with syllabus first, and then you will be embarking upon our first lecture. First thing first, students, Precis and composition carries 100 marks. It is a compulsory subject, and it is a part of English grammar. Now, students, your first question. Your first question would be that of MCQs. You would be given 20 MCQs, 10 synonyms and 10 antonyms. Each MCQs carries 1 mark, and as a whole, the question carries 20 marks. Your second question that is related to Precis writing. Precis writing carries 20 marks. Students, let me tell you what do you mean by Precis writing. Precis writing is basically a sort of artistic skills to understand the topic gender. So while embarking upon this very question, one must be flexible enough to encompass it as short as it should not lose the spirit information that we need. So basically, what do you mean by Precis? A paragraph would be given to you, most probably an unseen paragraph would be given to you. And of course, with an orientation to understand for the comprehension of the, to precise the best, or making it one by third. Students, as I told you, that Precis writing carries 20 marks. You have to suggest the title, and its title carries 5 marks, and the rest of the Precis carries 15 marks. Today we will be discussing in detail Precis writing later on. Your second question, reading comprehension. So what is comprehension? Again, a paragraph would be given to you, and you would be asked to go through the whole paragraph. And then certain questions would be given to you. You are supposed to answer each of the question one by one. The basic purpose of comprehension is to check the level of comprehension of a candidate by reading an unseen passage. Most probably you will be given 5 questions at the end of the passage, and each question, as I told you students, carries 4 marks. So the answer will tell the examiner whether the candidate is able to understand the short unseen passage by reading it within a time frame, of course. Ladies and gentlemen, let me tell you, the answer testifies the good comprehension of candidate or not. So this is the question. Your next question, grammar and vocabulary. Basically, grammar and vocabulary, it carries 20 marks. And the entire question is to check the technical language command of a candidate, whether he knows tenses, articles, prepositions, conjunctions, punctuations, even phrasal verbs can also be given to you. A question related to synonym and antonyms can also be there in your paper. So in short, the purpose of the entire grammar and vocabulary is to check the technical language command of a candidate. Then sentence corrections. Sentence corrections, by the way, carries 10 marks. And again, it is to check the command on the punctuation or grammar. It is related to the same grammar and vocabulary. There will be few sentences having structure flaws. You have to rewrite them correctly in terms of grammar and punctuations. So the mistakes can be that of grammar as well as that of punctuations. One thing more, students, there is no need to make any unnecessary alterations at all. Each stance, each sentence will have different mistakes. It will be one or more, there may be one or more mistakes in a single sentence. So the very purpose of sentence corrections is to check
the competence of a candidate, that whether he has command or technical command or language or not, English language or not. Then next, grouping of words. Again, grouping of words, there will be some 10 or 20 moderate selected groups of words. Neither very easy nor very difficult. Is moderate. This grouping of words may have similar, different, or even opposite meanings. Ladies and gentlemen, you have to make a group of words with similar or opposite. There will be clear instruction on what to do with these groups of words. And of course, I'll be teaching you in detail how to deal with these grouping of words. Then pair of words. Pair of words carries 10 marks. 10 pair of words will be there in your question paper. And the question may be seemingly similar words, but with different meanings. The pair of words generally confuse us in our communication, if you have come across such sort of words. And the purpose of pair of words is to check out the understanding of the difference in meaning. There are two words having same sound, but different meaning. So it is to check whether you have the understanding of the difference among different words or not. And you have to choose the best 5 of them. Most probably you would be given 8 different words, and out of it you are supposed to choose the best 5 of them. So you have to first explain them in parentheses, and then you have to use them in a sentence, in a mature sentence. Not just sentence, that the sentences must be very mature. Your last question translation. Students, the very purpose, the very aim of translation is to see the best and accurate English translation. You may be given 10 short Urdu sentences. You may be given a paragraph, and you are supposed to translate it into English. By the way, translation involves structure composition, some significant terms, and figurative or idiomatic expressions to translate in the best way. Students, your regular practice will enable you to have a good command on translation. So if you keep on writing, if you keep on practicing translation, you will be able to overcome all weaknesses, all mistakes that you are making in translating a paragraph. So this was all about prescient composition. I have just introduced you with prescient composition, Preci writing, reading comprehension, grammar and vocabulary. Students, grammar and vocabulary is a vast topic. It comprises of noun, pronouns, means all sort of speech. It also comprises of articles, punctuations, prepositions. It means it comprises of the whole grammar. So you can expect any question, any sort of question. Likewise, sentence corrections, grouping of words, pair of words, and translation. Now, students, let me again introduce you with the question paper. Just have a look at this question paper. This is part 2 of your English Precis Composition. Your first part is, as I told you, related to MCQs. You would be given 10 synonyms and 10 antonyms. आपको 10 antonyms दिए जाते हैं, 10 synonyms दिए जाते हैं. वो question number 1 है. And part first carries 30 marks. Within 30 marks, you are supposed to return your paper back. Part 2, it is, as I told you, that it is Preci writing, and you have to suggest a suitable title as well. So you can see this is English Precis Composition 2021. So this is a paragraph, and you have to concise it, precise it, and make it 1/3 of the original passage. Your second question, rather your third question, read the following passage carefully and answer the question given at the end.
Of course, you would be given this very such sort of paragraph. You have to go through the paragraph and then you have to answer the question below. For example, you can see 5 questions have been given to you. You are supposed to answer each of the question one by one. Then a question related to sentence corrections. You can see question number 4. Correct only 5 of the following. So 10 sentences have been given to you and you are supposed to opt for the best 5. Then question number 5, part A. Punctuate the following text with where necessary. So you have to punctuate the given paragraph. Put comma where it shall be. Put semicolon where it is needed. Put colon where it is needed. So you have to punctuate the whole paragraph. As I told you that I'll be teaching you in detail all punctuations that we have got in English language. Then rewrite in part B of question number 5. Rewrite the following sentences after filling in the blanks with appropriate prepositions. So a question related to preposition may be there in your paper. So now 7 MCQs have been given to you, 7 sentences have been given to you. You are supposed to opt for the 5, the answer of which is comprehensible to you. Then question number 6, 5 pairs. Again, it carries 10 marks. So you are supposed to opt for 5 pairs that are known to you, that are comprehensible to you. Then your last question, question number 7. An Urdu paragraph would be given to you and you will have to translate it into English. So this is all about your Precis and composition. मुझे स्टूडेंट्स जस्ट ये बता दें कि आप लोगों को मैंने CSS इंग्लिश Precis and composition के साथ इंट्रोड्यूस किया. कुछ समझ आ गई कि पेपर क्या है. एक तो पहले जिस तरह मैं बता चुका हूं कि दिस इज कंपल्सरी पेपर, कंपल्सरी है, इसके 100 मार्क्स हैं. कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे उनके साथ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया. एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है पेपर के हवाले से आप पूछ सकते हैं. ना हो तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. If you have got any question, I am here to entertain you all. I am here to address your questions. Okay, students. Now let's embark upon our first lecture. Okay, this is good. चलें, first lecture की तरफ हम जाएंगे. Let me share slide with you first. Okay, students, again, let me know, is the slide visible to you all? Can you see the slide? Okay, thank you. So let's get it started, students. Precis writing. First thing first. This is going to be your question number 2 of Precis and composition. Your first lesson about Precis writing is that you have to solve it at the end of your paper. When you are done with all questions, at the end of the paper, you are supposed to embark upon Precis writing. First, as I told you already, that it carries 20 marks. The question is of 20 marks.
we have divided the question in 3 parts. Your first part, title of the Precis. Title of the Precis carries 5 marks. Your second part, if you have rightly followed all techniques, all essentials that we have got for Precis writing, you would be getting 7 marks. So the 7 marks are confined for the essential or rules or techniques of Precis writing. If you have rightly followed all the techniques, all the essentials, all the rules that we have got for Precis writing, you would be getting 7 marks. The rest of the 8 marks are confined for the idea. If you have rightly perceived the idea of Precis writing, you would be given 8 marks. So we have divided the Precis in 3 parts. Now, students, first, let me tell you what do you mean by Precis. Precis basically means to precise something, to concise something, to cut something short. So basically, it is a summary or shortened form of a piece of writing. And ladies and gentlemen, in Precis writing, what matters the most important is the idea. So in Precis writing, ideas matter a lot. Usually students are asked to left out all the details and only the important points are retained. It is a short digest of the essential factors or ideas contained in a given passage. Students, brevity, conciseness, comprehension is thus the very essence of Precis writing. The students must possess the judgment to be able to seize upon the essential points in a passage and leave out what is unnecessary or non-essential. But one thing, students, it must also have an adequate vocabulary, not only to understand the meaning of the given passage, but also to express its main idea in its own language. So basically, Precis writing is an ability to write something in precise way, in concise way. And one thing most students, basically the FPSC wants to write Precis because it is essential qualification for working in government offices, even in newspaper offices, business houses, firms. So in practical life, in professional life, Precis writing carries huge importance. So this ability therefore be of great use or of great value to students even after having passed the CSS or PMS examinations. Once you would be done with CSS, this Precis writing will help you in your office when you would be assistant commissioner, when you would be ASP in police. So precise writing or Precis writing will help you. You are supposed to make summaries. So summaries will help you over there as well. So these are whizzed for the reason to try to acquire a certain degree of proficiency in art of Precis writing. So you are supposed to underline the important points to be included in your Precis. A point is important if it is intimately connected with the main subject, and if it is essential for clear exposition of the theme, then it must be written. It must be included in your Precis.
So we have got certain essential for Prezi writings. Ladies and gentlemen, let's discuss these essentials. One thing about students, I am addressing two types of students or two categories of students. One, those who don't have sound educational background. One, those who have sound educational background. And I am addressing both of you. So I will be making use of both English as well as Urdu. हम उर्दू में भी बात करेंगे, हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होंगे जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा, कुछ इस तरह स्टूडेंट्स होंगे जिनके एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होगा. तो हमने इंग्लिश में भी बात करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, उर्दू में भी. Let's discuss the essentials. First essential. Prezi must be 1/3 of the given length. A paragraph has been given to you. You have been asked to precise the paragraph, concise the paragraph, make summary of the paragraph, or make Prezi of the paragraph. So you have to make 1/3 of the original length. जो लेंथ आपको दिया गया है उसका आपने कितना बनाना है, 1/3 बनाना है. So students, first you need to know that when a paragraph is given to you, it consists of a certain number of words. When you make a Prezi of that paragraph, you are supposed to write 1/3 of the given paragraph, of the original paragraph. Let's say our original paragraph consists of 90 words. So, ladies and gentlemen, we will divide 90 by 3. So the answer is 30. So 30 would be the length of our Prezi, because we have to shorten it to make it 1/3 of the original passage. So the Prezi should be roughly 1/3 of the original passage. One thing more, students, always prepare a rough draft first and then count the words. If you find that it is too long, then shorten it by removing what seems unessential or non-essential, and by condensing phraseology, terms, jargons, dictions. So it will turn out to be too short. And there is possibility, students, that sometimes the paragraph, the Prezi that you are writing, turns out to be very short, to be too short. So in that case, read the original passage to see what more can be added to your Prezi. So you can inculcate certain other important points in your Prezi. So in short, 1/3 of the original passage. आपने क्या करना है, इतना करना है कि जो पैसेज आपको दिया है आपने उसका 1/3 लिखना है, इतनी सी बात आपको माइंड करें. स्टूडेंट्स, ये मुश्किल नहीं है. जिस तरह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, एक पैराग्राफ दिया है आपको कहा गया है कि इसको शॉर्ट करे, प्रिसाइज करे. कितना प्रिसाइज करना है? ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 आपने लिखना है. अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में टोटल 90 वर्ड्स हैं तो 1/3 कितना बनता है? 30 वर्ड्स बनते हैं. अगर इनकेस ओरिजिनल पैराग्राफ में 300 वर्ड्स हैं तो 300 वर्ड्स को आपने शॉर्ट करना है, छोटे करने हैं, कितना लिखना है? 100 वर्ड्स की Prezi आप लिखें. इतनी सी बात है बस. मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट, मेकिंग यूज ऑफ योर ओन लैंग्वेज. I'm asking student time and again to make use of your own language, own words. So a Prezi should be written in your own words, and the writer should abstain from borrowing words from the original passage. So do not borrow words from the original passage. Make use of your own words. Use your own language in the Prezi. While words and phrases from the original passage may be used, you may use 5 to 7 words and phrases from the original
Precis. But the whole sentence, your whole sentences should never be left out of the original passage to be included in it. You can borrow 5 to 7 words, but you cannot borrow a complete sentence in the original form from the original passage. आप कुछ words borrow कर सकते हैं, 5 to 7 words original passage से, लेकिन आप complete sentence original form में original precis से borrow नहीं कर सकते. Original paragraph से आपने complete sentence borrow नहीं करना. If you have borrowed a complete sentence from the original passage, you have not only made a mistake, rather a blunder. अगर आपने ओरिजिनल पैराग्राफ से ओरिजिनल सेंटेंस उसी फॉर्म में बोरो किया है तो आपने ब्लंडर किया है, जस्ट मिस्टेक नहीं किया है बल्कि ब्लंडर किया है. आपने याद रखिएगा कंप्लीट पैसेज कंप्लीट वो बोरो नहीं करना है सेंटेंस. स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें कि आपको समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माय लेक्चर? ओके चलिए ठीक. नेक्स्ट, continuity. It is very important for students to have continuity from the first idea to the next idea. Your precis should give a look, a wholesome look, a wholesome look. Usually I am asking my students that your precis must have coherence. 3 things should be there in your precis. In short, 3 C's. आपके precis में 3 C's होने चाहिए. 3 C's. सबसे पहले क्या है? आपकी precis में coherence होना चाहिए. Coherence, C-O-H-E-R-E-N-C-E, coherence. Second, concise होनी चाहिए आपकी precis. C-O-N-C-I-S-E, concise. C-O-N-C-I-S-E. So your precis shall be well coherent, well connected. It must be concise. आपकी precis concise होनी चाहिए, well connected होनी चाहिए और clear होनी चाहिए. थर्ड हमारे पास क्या है? Clear, C-L-E-A-R. तो आपकी precis में 3 चीजें होनी चाहिए. एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कंसाइजनेस या कंसाइज होनी चाहिए आपकी precis. सबसे पहले हम बात करेंगे कोहेरेंस. What do you mean by coherence? Ladies and gentlemen, coherence means the logical and clear interconnectedness of ideas in a written piece of work. Logical and clear interconnectedness of ideas. And a good precis should always be and is always coherent. The ideas which are presented in precis must have a logical connection, and they all should be interrelated. In short, we may say that the main idea should be well knitted, so that the writer may not confuse and lose its interest. In other words, you have to maintain flow in precis writing. There should be proper flow. रवानगी होनी चाहिए. उर्दू में हम क्या कहते हैं? रवानगी होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए. While writing your precis, ladies and gentlemen, make sure that the ideas are presented in a well-connected way, in a well-connected manner, and present an orderly flow of information. Your sentences shall be well connected and coherent.
Doing this would make it easier for the readers, is easier for the examiner to grasp the main idea or the gist of the information provided. मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि आपकी प्रेसी में कनेक्टिविटी नहीं है। दो चीजें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कनेक्टिविटी के हवाले से। कीप इन माइंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक यह है कि आपके सेंटेंसेस के दरमियान में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप जो सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं उनके दरमियान में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आइडियाज के दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पहली बात मैंने की कि सेंटेंसेस के दरमियान, सेकंड मैंने कहा आइडियाज के दरमियान। नाउ क्वेश्चन ये है कि सेंटेंसेस के दरमियान हम कनेक्टिविटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हाउ टू इंश्योर कनेक्टिविटी अमंग सेंटेंसेस? तो एक सिंपल सा टेक्निक मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, अपने पास नोट डाउन करें। ये जो वर्ड्स हैं जिसको हम एडवर्ब्स हैं लेकिन लिंकिंग एडवर्ब्स, कंजुगेटिव एडवर्ब्स यूजुअली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंजुगेटिव एडवर्ब्स। कंजुगेटिव एडवर्ब्स, कंजुगेटिव एडवर्ब्स। जिस तरह देयरफॉर है, इन द सेम वे, अकॉर्डिंगली, लाइकवाइज, ओवर एंड अबव, likewise, over and above, therefore, moreover, contrary to this, accordingly, in accordance। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका यूज आपने करना है। मेक यूज ऑफ दिस कंजुगेटिव एडवर्ब्स। It will automatically help you in bringing connectivity among sentences। सेंटेंसेस के दरमियान ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी आ जाएगी। सेकंड, आइडियाज के दरमियान कनेक्टिविटी कैसे लेके आ सकते हैं? एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ का हमेशा से एक ही थीम होगा। जो पैराग्राफ आपको दिया गया होता है उसका हमेशा से एक थीम होगा, एक मेन थीम होगा, एक मेजर थीम होगा। सब थीम्स हो सकते हैं लेकिन मेजर एक थीम होगा। याद रखिएगा कि हर वो आइडिया जो मेन थीम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है या रेलेवेंट है या कनेक्टेड है उसको आपने लिखना है, और हर वो आइडिया जो मेन थीम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या रेलेवेंट नहीं है या कनेक्टेड नहीं है उसको आपने ओमिट करना है। सो अगर आप आइडियाज के दरमियान कनेक्टिविटी लेके आना चाहते हैं तो हर वो आइडिया जो मेन थीम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको आप ओमिट। स्टूडेंट्स, the question is, what is the thing that create hurdle in connectivity of your passage? So any idea that is not directly linked to the main message or the main theme of the given passage shall be done away with. Such an idea creates hurdle in the continuity of your pressing. Let me give you an example. Now the example that I'm going to give you is very clear. In CSS prescient composition, you would not be given such clear example. The example that I have included in these slides is just to let you know how sort of irrelevant idea can be there and how to deal with such irrelevant idea. For example, poverty is an economic condition of a person or the whole family
A person living in poverty becomes unable to meet basic needs. Poor people are depraved and deprived. It affects person and his social life badly. It is very common to see poverty. Poverty is the root cause of most problems in society. Education is a process of learning through which we acquire knowledge. It enlightens, empowers, and creates a positive development. Hunger, illness, and death are the primarily outcome of poverty. Poverty puts people away from their fundamental necessities. Now, ladies and gentlemen, the whole précis is about poverty. But there is one irrelevant idea. There is one idea which has nothing to do with the main passage, with the main theme. So such idea shall be done away with. Such idea shall be removed. इस तरह का आइडिया जो मेन थीम के साथ डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि होल पैसेज पॉवर्टी से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन एक इस तरह आइडिया है जो मेन थीम के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इस तरह के आइडिया को आपने क्या करना है, ओमिट करना है. तो इन शॉर्ट वापस आ जाते हैं, आपके सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके आइडियाज में के दरमियान भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए. सेंटेंसेस के लिए आपने कंजुगेटिव एडवर्ब्स यूज करने हैं और आइडियाज के दरमियान ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी आ जाएगी अगर आप हर इररिलेवेंट आइडिया जो मेन थीम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको आप ओमिट करते हैं. मुझे स्टूडेंट्स ये बता दें, इस पॉइंट की समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अगर इन केस कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क. चले आगे फिर चलते हैं. अभी तक हमने 3 चीजों को डिस्कस किया है. एक, मैंने ये कहा है कि आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए. 1/3 आपने लिखना है. ओरिजिनल जो पैराग्राफ दिया है उसका आपने शॉर्ट करना है. कितना शॉर्ट करना है? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. ओरिजिनल पैसेज में 100 है, आपने तकरीबन 32-33 वर्ड्स. इसी तरह नेक्स्ट मैंने ये कहा है कि आपने वर्ड्स बारो नहीं करने हैं, आपने अपनी लैंग्वेज यूज करनी है. इसी तरह मैंने ये कहा है कि सेंटेंस कुछ वर्ड्स आप बारो कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. यू कैन बारो 5 to 7 वर्ड्स. 5 to 7 वर्ड्स आप बारो करें, लेकिन इससे ज्यादा. फिर मैंने कहा कंप्लीट सेंटेंसेस आपने बारो नहीं करने हैं. फिर मैंने कहा कि आपके प्रेसी के दरमियान या प्रेसी में कनेक्टिविटी होनी चाहिए. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए. योर प्रेसी मस्ट हैव क्लैरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिटी? अगेन स्टूडेंट्स, क्लैरिटी मीन्स what we can say getting your message across or getting your message conveyed successfully in such a way that the receiver can understand what the writer is trying to convey, what message he wants to try to convey. So it is the basic and essential need of a person. The ideas should be very, very clear and of course understandable. There should be no ambiguity, no confusion in your writing. You can achieve clarity, ladies and gentlemen, by making use of simple language and simple structure. If you have embarked upon difficult words, jargons, dictions, your précis will never give a clear look. So it is as simple as it is. If your précis is not understandable to the examiner, it will lose its importance, and of course it will lose the meaning of the reader. So the very thing is that your précis must be very clear. And last हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि आपकी précis concise होनी चाहिए. So conciseness is a sort of
is a sort of desirable quality of a good place. Concise, what do you mean concise? Concise means to say all that needs to be said and no more. To say all that needs to be said and no more. No extras. No non-essential information. So you should write what is necessary and avoid writing unnecessary details. A concise piece of writing or a concise piece of work conveys the message in fewest possible words. But one thing, students, one point that you must keep in mind, that you should not omit the basic and essential information to achieve conciseness. So in short, I have certain suggestions for you all. इन suggestions पे आप वो करें. एक तो यह है कि unnecessary details आप omit करें. जो repeated ideas है उनको भी आप omit करें. First, omit unnecessary details. Second, omit unnecessary repetition. Next, include only relevant material, relevant ideas. And last, eliminate wordy expression. Eliminate wordy, W-O-R-D-Y, wordy expression. Verbose नहीं होना चाहिए. एक word use होता है verbostic, कि आपकी writing verbostic है. Verbostic means कि आपने इतने मुश्किल टर्म्स यूज किए हैं, इतने मुश्किल कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हैं, इतने कम्प्लेक्स आप बना चुके हैं प्रेसिको के कि हम राइट समटाइम्स द एग्जामिनर गेट ऑब्सेस्ड विद राइटिंग विद सच डिफिकल्ट वर्ड्स, jargons, dictions. बी वेरी सिंपल, सिंपल राइटिंग करें, वर्बोस्टिक ना बनाए. क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट, अगेन योर प्रेसी मस्ट हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? फॉलो द सेम ऑर्डर, फॉलो द सेम sequence. The first write the idea that has been explained first in the original passage. Then write the idea that has been explained in the original passage. Then likewise third, fourth and fifth. So students, आपने क्या करना है? चेंज नहीं करना है. जो बात फर्स्ट स्टार्ट में लिखी गई है, फर्स्ट नंबर पे जो आइडिया एक्सप्लेन हो चुका है, सबसे पहले आप उसी आइडिया को लिखें. फिर जो सेकंड नंबर में जो आइडिया ओरिजिनल पैसेज में एक्सप्लेन हो चुका है, आपने सेकंड नंबर पे उसी आइडिया को लिखना है. थर्ड नंबर पे जो ओरिजिनल पैसेज में बात हुई है, थर्ड नंबर पे आपने उसी बात को एक्सप्लेन करना है. तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि उसी ऑर्डर को आप फॉलो करें, उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करें. आपने ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट हमारे पास क्या, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी मैं देता हूं कि आई विजिटेड various cities of Pakistan last month. First I went to Lahore, then I went to Karachi, later on I proceeded to Peshawar and eventually I Islamabad. जब आप इसकी प्रेसी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि the writer said that he visited Lahore, then Islamabad, then Karachi, then finally Peshawar. पहले मैंने लाहौर विजिट किया था तो मैंने पहले लाहौर की बात करनी है. सेकंड नंबर पे मैं कराची विजिट किया हूं और यहाँ पे प्रेसी में मैंने लिखा है कि मैं इस्लामाबाद विजिट कर चुका हूं.
लेकिन a sequence distort हो गया. I have distorted the sequence of the original passage. Original passage का मैंने sequence distort किया. So it would be considered incorrect. Incorrect consider किया जाएगी. तो इसको आपने क्या करना है, इसका ख्याल रखना है. Next क्या है कि your precis must be meaningful and self-contained. What do you mean by meaningful? Students, let me tell you that by meaningful we mean that any ordinary reader should understand the information that you have inculcated in your precis. एक आम आदमी को भी आपकी प्रेसी की समझ आ जाए, इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. So for that sake we must use simple and plain English. Simple and plain English while writing precis. So using difficult vocabulary and difficult idiomatic expression is not advisable at all. Likewise, students, self-contained का क्या मतलब है कि अगर इन केस ओरिजिनल पैसेज में टोटल 5 सब आइडियाज हैं, तो आपने भी अपनी प्रेसी में सारे के सारे 5 सब आइडियाज इनकलकेट करते हैं. ओरिजिनल प्रेसी में अगर 10 सब आइडियाज हैं, तो आपने 10 सब आइडियाज. मीन्स ये है कि ऑल इनकम्पासिंग होनी चाहिए, कोई आइडिया मिस ना हो. A single idea shall not be left out. Sentences की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, हम आइडियाज की बात करते हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि हम हर सेंटेंस की प्रेसी लिखने जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने हर सेंटेंस की प्रेसी नहीं लिखी, हर सेंटेंस की आइडियाज की प्रेसी आपने लिखी. सेंटेंसेस में हो सकता है कि नेक्स्ट आइडिया 4 सेंटेंसेस में हो सकता है कि नेक्स्ट आइडिया 5 सेंटेंसेस में. Your precis shall be all encompassing. It shall be self-contained. Do not make precis of sentences. Make precis of ideas. First of all, count the sub-ideas. There is one thing and the rest are sub-ideas. Count how many ideas are there in the given passage. So all ideas must be clearly, lucidly mentioned in your precis. Not even a single idea shall be missed. If you have missed a single idea, you will lose certain marks. So आपने इसके बाद जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था हमारा कि हम हर सेंटेंस की आइडिया लिखते, फॉरगेट अबाउट दैम. हमने आइडियाज की प्रेसी लिखनी है. आप देखिए कि एक प्रेसिस में 3 आइडियाज हैं, 4 आइडियाज हैं, 5 आइडियाज. एक सेंटेंस में भी एक आइडिया हो सकता है, 4 सेंटेंसेस में भी एक आइडिया हो सकता है. तो अपने आइडियाज की आपने प्रेसी लिखनी है, न कि सेंटेंसेस की प्रेसी. नेक्स्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंपल वर्ड्स यूज करें. ऑलवेज मेक यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट प्रेसी इन 1 पैराग्राफ. आपने याद रखना है कि एक ही पैराग्राफ में प्रेसी लिखनी है. It doesn't make any difference if the original passage comprised of 2 ideas, 2 paragraphs, 3 paragraphs, or 4 paragraphs. Concise your precis, precise your precis to just a single and 1 paragraph. आपने हमेशा से प्रेसी एक ही पैराग्राफ में. Okay, next. Direct speech. Students, always
write Prezi in indirect speech. If there is direct speech in the passage, it should be changed into indirect speech. What do you mean by direct speech? Anything, any sentence which is enclosed in inverted commas, any idea that is enclosed in inverted idea is called direct speech. And direct speech denotes, it implies that these are the original words, actual words of right. डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है कि ये राइटर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ये स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ये किसी बंदे के ओरिजिनल वर्ड्स हैं। हम कैसे पहचानेंगे? How we would identify whether a sentence is in direct or in indirect speech. So if a sentence is enclosed in inverted commas, it would imply that it is a direct speech. अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्ट स्पीच है. So Prezi shall always be written in indirect speech. A single quotation shall not be used in your Prezi. It should be plain. It should be a plain paragraph. कहीं पे भी आपने कोटेशन यूज नहीं करनी. It is as simple as this. Next, remove certain figure of speech. Students, it is again a very important point. Figure of speech. Ladies and gentlemen, examples, illustrations, and comparison should be left out of the Prezi, shall be omitted, shall be done away with. Figure of speech like quotations, examples, stories, remarks, exclamatory marks should be removed, and only ideas shall be expressed in clear and direct language. Often in a paragraph, examples are provided, but you need to omit such examples while writing Prezi. You may be given certain stories, so certain stories shall also be omitted. First thing, quotation. Do you know what do you mean by quotation? Quotation is basically the certain celebrated words of a famous person. Celebrated words, eulogized words of a great person. किसी बंदे के फेमस को वर्ड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कोटेशंस. तो पहली बात यह है कि अगर ओरिजिनल पैसेज में कहीं पे कोटेशन है तो आप उसको कंप्लीटली ओमिट करें, आपने उसको नहीं लिखना. फॉर एग्जाम्पल, only the that have seen the end of war. ये प्लेटो के ओरिजिनल वर्ड्स, so just do away with such words, omit करें उसको. नेक्स्ट, स्टोरीज. याद रखिए स्टूडेंट्स के स्टोरीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहली कैटेगरी वो है कि जो पैसेज दिया गया है स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो एक स्टोरी है. द पैसेज दैट हैज बीन गिवन टू यू इज इटसेल्फ अ स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टिल इट्स एंड. The paragraph is a story. You have been asked to read the paragraph and precise the paragraph, cut the paragraph to 1/3 of the original passage. एक स्टोरी दी गई है, आपसे कहा गया है कि आप इसकी प्रेसी बना लें. फॉर एग्जाम्पल 2016 की जो प्रेसी,
अगर आप 2016 की प्रेसी पढ़ लेते हैं तो वो स्टार्ट से लेके लास्ट तक एक स्टोरी है। स्टूडेंट से कहा गया है कि इस स्टोरी को रीड आउट करें और इसकी प्रेसी लिखें। तो याद रखिएगा कि इस तरह अगर स्टोरी दी जाती है तो फिर आपने उसको प्रिसाइज करके, कंसाइज करके 1/3 लिखना है। कंप्लीटली उसको ओमिट नहीं करना है, कंप्लीटली स्टोरीज को रिमूव ना करें, उसका 1/3 आप लिख लें। ये कौन सी है जो फ्रॉम ए टू जी एक स्टोरी। अच्छा, एक तो ये बात। सेकंड हमारे पास क्या है कि एक इस तरह सिचुएशन है कि एक पैराग्राफ दिया गया है, कोई सभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान में एक स्टोरी इनकलकेट की गई है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में एक पैराग्राफ दिया गया और पैराग्राफ बेसिकली क्या है, एक जनरल पैराग्राफ है, उसके दरमियान में एक स्टोरी इनकलकेट की। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि ट्रूथ के हवाले से कोई पैराग्राफ है। किस चीज के हवाले से है? ट्रूथ के हवाले से जनरली एक पैराग्राफ दिया गया है। स्टूडेंट से क्या कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह पैराग्राफ दिया गया है ट्रूथ के हवाले से कि truth is something that is followed, that is following reality. Truth can be relative to a person and dominated by an individual's subjective thought and beliefs. Truth is purity that helps in differentiating between right and wrong. So truth is all about facts and evidences. One should always be true. One should not be telling a lie. Truth does not change because we learn something about it. So being truthful is vital in life because it brings happiness and builds strong trust bonds with people. Truth can be complicated sometimes, but truth is a reality, and action without any filter and telling the truth and accepting are also important. It is easier to tell a lie, but truth has its own beauty and depth. Means ये है कि स्टार्ट से लेके किया किसी लास्ट तक ट्रूथ के हवाले से, फिर आपको उसके दरमियान में एक स्टोरी इनकलकेट की गई। आप जब 8th क्लास में थे या 7th क्लास में थे तो एक स्टोरी थी क्राइंग वुल्फ। शेर आया, जब सारे गांव वाले वहां पे चले जाते हैं तो रियल में शेर नहीं होता है। दूसरे दिन तीसरे दिन रियल में शेर आ जाते हैं और भेड़ बकरियां और वो जो चुराहा होता है सबको कहा जाता है। तो इन शॉर्ट क्या है कि एक पैराग्राफ है ट्रूथ के हवाले से और ट्रूथ उसके बाद एक स्टोरी दी गई है। तो जब आपने प्रेसी लिखनी है, आपने जो ट्रूथ के हवाले से पैराग्राफ है उसको आपने लिखना है, लेकिन जो स्टोरी दी गई है उसको आपने ओमिट करना है। स्टोरी आपने नहीं लिखनी है। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द लेक्चर? या मुझे बता दे लेक्चर की समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने कहा 2 तरह के स्टोरीज हैं। एक वो है कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक एक स्टोरी है। स्टार्ट से लेके लास्ट तक क्या है, एक स्टोरी है। एक स्टोरी दी गई है, आपसे कहा गया है कि इस स्टोरी को गो थ्रू करें और इसकी प्रेसी लिखी। तो आपने क्या करना है, प्रेसी लिखनी है उसकी, उसको कंप्लीट ओमिट नहीं करना है।
लेकिन अगर इनकेस एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में से ही एक स्टोरी दी गई है, पैराग्राफ के दरमियान में स्टोरी इनकलकेट की गई है, तो फिर आपने क्या करना है, कंप्लीट पैराग्राफ की प्रेसी लिखनी है, लेकिन स्टोरी को आपने कंप्लीटली ओमिट करना है, इसको बाहर निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स। यस, again we have two types of examples, we have two categories of examples, दो कैटेगरीज के एग्जांपल्स। एक वो है जिसको हम क्या कहते हैं शाहिद खान, जिसको हम कहते हैं एनलिस्टेड एग्जांपल्स। एनलिस्टेड एनलिस्टेड एग्जांपल्स। ठीक है, एक को हम कहते हैं डिटेल्ड एग्जांपल्स। डिटेल्ड या एक्सप्लेन्ड एग्जांपल भी आप कह सकते हैं। तो दो तरह के एग्जांपल है, एक डिटेल्ड एग्जांपल है, एक इनलिस्टेड। इनलिस्टेड जिस तरह वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी चीज की लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अहमद इज ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन। अब ये कंप्लीट क्या है, ये लिस्ट है। अहमद इज ब्रेव, इंटेलिजेंट, लॉयल, ट्रूथफुल, सिंसियर एंड गुड पर्सन। तो क्या है, ये कंप्लीट एक डिटेल्ड एग्जांपल, इनलिस्टेड एग्जांपल या सीरीज ऑफ एग्जांपल। तो जब आपने प्रेसी लिखनी है तो इनलिस्टेड एग्जांपल्स को कंप्लीटली ओमिट करना है। आपने जस्ट लिखना है कि अहमद इज अ गुड पर्सन, अहमद इज अ गुड पर्सन, अहमद इज अ नाइस पर्सन। बस ये कंप्लीट ये लिस्ट नहीं लिखना है कि अहमद इज ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ये फ्ला फ्ला फ्ला, ये पूरा वो नहीं। इस तरह एक और एग्जांपल मैं देता चलूं। मैं कहता हूं कि I have visited various cities of Pakistan. I have visited Lahore, Karachi, Faisalabad, Quetta, Islamabad, and Peshawar. एक complete एक list of examples है, जिसको enlist examples कहते हैं। अभी आपने ये सारी लिस्ट को आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है कि I have visited मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सेकंड है हमारे पास डिटेल एग्जाम्पल। सेकंड हमारे पास क्या है, डिटेल्ड एग्जाम्पल। डिटेल एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई हैव विजिटेड वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान बट आई लाइक इस्लामाबाद द मोस्ट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल। अभी एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो क्या है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इट इज the ninth largest city in Pakistan. It has a population of almost 5 million. Likewise, there are the city is home to different universities, including Qaid Azam University, NUST, Bahria University. The city is considered as one of the safest city in Pakistan and has an expensive lifestyle. It is home to certain embassies like American Embassy, British Embassy. So, and it is located on the Pothohar Plateau of northern region.
of Punjab, of course. So in short क्या है कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया, वो क्या था, इस्लामाबाद, उसको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज की, कि डिटेल एग्जाम्पल के साथ हमने क्या करना है। तो अगर शॉर्ट एग्जाम्पल है फिर तो इशू नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया गया है तो फिर आपने उसको ओमिट नहीं करना है, फिर आपने उसको लिखना है, फिर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपने जस्ट लिखना है कि आई लाइक इस्लामाबाद द मोस्ट बिकॉज इट इज होम टू सर्टन मेजर यूनिवर्सिटीज, it has a major or one of the big mosque, Faisal Mosque. It is home to certain embassies as well. बस इतनी सी बात करते हैं। मीन्स ये है कि आपने डिटेल से इसको लिखना जरूर है, कंप्लीटली ओमिट नहीं करना है, लेकिन ये है कि डिटेल से नहीं लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क्स। रिमार्क्स किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स in which we express emotions and give order, in which we express emotions and give order। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है कि हमने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आउच यू हर्ट मी, या हुरा आई क्वालिफाइड सीएसएस, या हम कहते हैं लॉस वी लॉस्ट द मैच। तो अभी जब आपने प्रेसी लिखने हैं तो आपने ये हुरा वर्ड नहीं लिखना है, आपने लॉस वर्ड नहीं लिखना है, आपने ये आउच वर्ड नहीं लिखना है, बाकी आइडिया लिखना है। आपने जस्ट लिखना है कि द राइटर सेड दैट ही क्वालिफाइड सीएसएस, द राइटर सेड दैट ही क्वालिफाइड सीएसएस। ये नहीं लिखना है कि हुरा आई क्वालिफाइड सीएसएस, आपने जस्ट लिखना है कि द राइटर सेड दैट ही क्वालिफाइड सीएसएस, द राइटर सेड दैट ही लॉस्ट द मैच, the writer said that he was hurt। आपने जस्ट इतनी सी बात करनी है, ये इतना डिटेल नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें कि आप लोगों की इसकी समझ आ गई कि आपने कोटेशंस के साथ क्या करना है, स्टोरीज के साथ क्या करना है, एग्जांपल्स के साथ क्या करना है, रिमार्क्स के साथ क्या करना है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंग्लिश में हमारे पास तीन तरह के पर्सन प्रोनाउन, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई वी, ये जो आई वी है हमारे पास जो प्रोनाउंस है, एक आई है, दूसरा वी है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। यू जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। बाकी जो हमारे पास रह गई ही, शी, इट, दे, ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थोड़ा सा मिनट। अच्छा, गॉट इट, ठीक है। चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, आई भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपने प्रेसी लिखनी है तो आपने हमेशा से थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, ठीक है। सो प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। For example, if the original text is somewhat like this, that अगर इस तरह कोई है कि I think education is the major factor behind the success of any country. So if
I word has been used. If I word has been used, अगर I word use हो चुका है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे स्टूडेंट्स प्लीज. You जो है ना वो सेकंड पर्सन है. देखिए ना, I we ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, I और we ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है. You जो है YOU ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो he, she, it, they. चलिए ये लिख के दे दिया. ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अगर ओरिजिनल पैसेज में वर्ड आई यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई या इस तरह मैं कहता हूं, जिस तरह 2016 की प्रेसी है वो स्टार्ट होती हैं कुछ इस तरह, जितना मुझे याद है मैं बता देता हूं. 2016 की अगर प्रेसी आप गो थ्रू कर लेते हैं, उसमें वर्ड आई टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है. वो कहते हैं कि ड्यूरिंग समर वेकेशंस I decided to visit some places and enjoy there. Then one of my friend suggested me to visit far-flung areas, countryside, rather than crowded areas. So deciding upon the suggestion of my friends, I went to a countryside named Cherokee. Cherokee was a beautiful place. I came across the tradition and culture of the Cherokee. One of the native befriended me over there. I was invited for dinner. We dined together. Then we went to museum. We enjoyed there. We came across certain historical buildings, this and that. मीन्स ये कि वो स्टार्ट से लेके लास्ट तक वर्ड आई यूज कर रहा है. तो जब आपने प्रेसी लिखनी है तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि द राइटर सेड that during summer vacation he wanted to visit some places. Then one of his friends suggested him. ये नहीं लिखना है कि one of my friend suggested me. आपने लिखना है कि one of his friends suggested him to visit Cherokee. फिर आपने ये नहीं लिखना है कि during my visit to Cherokee. आपने लिखना है during his visit to Cherokee. थर्ड पर्सन में लिखना है. During his visit to Cherokee, he came across the traditions and culture of the native. तो आपने ये नहीं लिखना है कि I came across the tradition and culture of the village. आपने लिखना है कि he came across the traditions and the culture of the village. तो मैंने I को चेंज किया है he में, थर्ड पर्सन में. अगर we लिखा हुआ है तो आप they में चेंज कर दें. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि we are not loyal to our country. We have always betrayed our country. They have been violating the rules and the constitution of our country. We have never been good citizens. तो अगर we लिखा हुआ है तो आपने लिखना है कि according to the writer, they have never been good citizens. They have never contributed to the development of the country. They have always violated the rules of the constitution of the country. तो मैंने we को they में चेंज किया. अगर ओरिजिनल पैसेज में you वर्ड लिखा हुआ है कि you should not, for example मैं कहता हूं you should not waste your time, you should always be loyal to your country, you should be good to your parents, you should be good to your friends. तो इन शॉर्ट क्या है कि you वर्ड यूज हुआ है. तो आपने जब प्रेसी लिखनी है आपने लिखना है कि one should not waste one's time. आपने क्या लिखना है? one लिखना है, ONE. you को आपने चेंज करना है one में. one should not waste one
time. One should be loyal to one's country. One should be punctual. One should be having good etiquettes. तो इन शॉर्ट क्या है कि हमने यू को वन में चेंज किया है। मुझे स्टूडेंट्स ये बता दें कि आपको समझ आ गई कि आपने कभी भी अपनी प्रेसी में आई वर्ड या यूज नहीं करना है, वी वर्ड यूज नहीं करना है, यू वर्ड यूज नहीं करना है। आपने अपनी प्रेसी ही, शी, इट, दे या वन में चेंज करना है। मुझे ये बता दें कि इस पॉइंट की समझ आ गई आप लोगों को? That the precis shall always be written in third person. Students, if you have any question, if you haven't understood this point, let me know. I'll repeat it once again. मुझे समझ नहीं, because the issue with the online class is that it is a sort of one-way communication. But I am trying my level best to make it more conversative. Sir, your को किस में change? Your को they में change करें. For example, you should not waste your time. तो आपने लिखना है they should not waste their time. THEIR there. Sir, detailed example वाला point बता दें. अच्छा, डिटेल्ड एग्जाम्पल सिंपल इज दैट कि मैंने कहा कि दो तरह के एग्जाम्पल है। एक लिस्ट किसी चीज की दी गई है, एग्जाम्पल है जिस तरह मैं कहता हूं कि मरियम इज ब्रेव, इंटेलिजेंट, इस तरह एक्सलेंट एंड स्टूडियस गर्ल। तो ये जो है महम, ये आपकी क्वालिटीज है। तो आपने कंप्लीट क्वालिटीज नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है कि महम इज अ गुड गर्ल, इतनी सी बात है। महम इज अ गुड गर्ल, इट इज मोर देन इनफ। ये सारे ये नहीं लिखना है कि ब्रेव भी है, इंटेलिजेंट भी है, लॉयल भी है और ये भी है, वो भी है, सारे एग्जांपल्स नहीं। ये लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। वेट, आमना थोड़ा सा वेट करें, मेरे जहन में है लेकिन ये एक इनको मैं समझा दूं। डिटेल एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि there are many teachers at Noah Academy, but Adnan is my best teacher. अभी एक अदनान को आपने लिया, there are many teachers, Adnan, Imran, Kamran and Afnan teaching at Noah, but Adnan is my best teacher. Adnan is teaching chemistry. He is well qualified. He helps students in assignment writing and other home tasks. He belonged to a noble family. He gives us more time than being allocated by the academy. This and that means कि एक को मैंने लिया है अदनान को। अदनान एक एग्जाम्पल है, उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने फिर इस तरह एग्जाम्पल को आपने कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने उसको लिखना है। पहले तो हमने कहा कि इसको कंप्लीट रिमूव करे, जस्ट लिखे, जस्ट एक वर्ड उसके लिए लिखे, लेकिन यहाँ पे आपने कंप्लीटली आपने जस्ट कहना है कि अदनान इज आई लाइक अदनान द मोस्ट, यार अदनान इज माय फेवरेट टीचर because he belongs to a noble family and having good etiquette and helps students in his studies. बस इतनी सी बात। हम समझ आ गए आप लोगों को, आपको कि सीरीज ऑफ एग्जांपल्स हैं, उसको ओमिट करें। एक एग्जांपल है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है 3 लाइंस में या 4 लाइंस में, है एक एग्जांपल, लेकिन 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है, फिर आप उसको शॉर्ट करके लिए। चलें आगे फिर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऑलवेज मेक यूज ऑफ एक्टिव वॉइस। ट्राई योर लेवल बेस्ट, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, इट इज नॉट हार्ड। मेक हैबिट ऑफ यूजिंग एक्टिव वॉइस while writing any piece. कभी भी कोई भी आप ऐसे लिखते हैं, प्रेसी लिखते हैं, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, try your level best
to make use of active voice. Now, ladies and gentlemen, if the complete passage has been written in active voice and just 2 or 3 sentences have been written in passive voice, it would be having no negative repercussions upon your paper. We are human beings again. We are not robots. We are not computer. We are not machines. If the whole paragraph has been written in active voice, but there are 2 sentences that are in passive voice, it would be having no negative effects upon your passive. But try your level best. Try your level best to make use of active voice while writing essay, précis or any piece, any work. कुछ भी आप लिखते हैं, एक हैबिट बना ले कि आप एक्टिव वॉइस यूज करें, कोशिश करें पैसिव वॉइस को यूज ना करें. Grammarians usually discourage making use of passive voice. यहां तक ये क्लियर हो गई ये पॉइंट कि आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव कोशिश करें. तो ये नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल. स्टूडेंट्स आप बोर तो नहीं हुए मेरे लेक्चर से? चूंकि इंग्लिश कुछ इस तरह ही सब्जेक्ट है, कभी कभी एक तरह से कह सकते हैं आपके इट इज अ ड्राई सब्जेक्ट. कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बल्कि लेक्चर ही कभी कभी ज्यादा ड्राई हो जाता है. बार ये फर्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, अब बाकी लेक्चर्स में फिर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इन चीजों को. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. Making use of same tense. Students, if the original passage that has been given is in present, make use of present tense. If the original passage is in past tense, then make use of past tense. If the original passage is in future tense, then make use of future tense. So follow the same tense. उसी टेंस को आपने फॉलो करना है. ओरिजिनल पैसेज पास्ट में है तो आपने भी पास्ट टेंस में लिखना है. ओरिजिनल पैसेज अगर प्रेजेंट में है तो आपने भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है. इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि आप उसी टेंस को फॉलो करें, टेंस को आपने चेंज नहीं करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने पढ़ा है थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर देता हूँ. जो न्यू स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, वन थिंग वो स्टूडेंट्स बीइंग टाइम पे आया करें प्लीज. और दूसरी बात ये कि डू नॉट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर. अगर आप एक सिंगल लेक्चर मिस कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश इंटरकनेक्टेड है. आज आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर को समझने में आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मिस इवन अ सिंगल लेक्चर. And one thing more students, CSS is all about English. If you have good writing skills, you will definitely get CSS done. But if you are unable to write a correct English sentence or a correct English paragraph or a correct English essay, then you won't be able to get CSS done. So keep on writing. Try your level best to improve your writing and get your assignments, get your works checked. Students, CSS मुश्किल नहीं है, मैं क्लियर वर्ड्स में बता दूं. आपकी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स होना चाहिए. आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, टाइम एंड अगेन लिखें और चेक करवाएं. LMS पे अपने असाइनमेंट्स भेज दिया करें ताकि आपकी असाइनमेंट्स चेक हो, फीडबैक आपको मिले. हम हरगिज ये माइंड नहीं करेंगे कि आपने एक असाइनमेंट 2-3, आप दिन में 5 असाइनमेंट चेक करवाया करें, LMS पे सेंड किया करें, चेक करवाया. ठीक है, ऑन योर पार्ट you should do your level best. Get your assignments checked on daily basis. CSS is all about English. If you have good writing skill,
then definitely you will get it done. प्रेसी राइटिंग आज पढ़ा रहा हूं। प्रेसी का मैंने जिस तरह बता दिया, जल्दी जल्दी में जो कुछ हमने पढ़ा है जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात यह है कि आपने ओरिजिनल पैसेज का 1/3 लिखना है। सेकंड यह है कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। थर्ड यह है कि आपने ओरिजिनल पैसेज से सेंटेंसेस बारो नहीं करना है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि आपकी प्रेसी में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैंने कहा कैसे कंटिन्यूटी लेके आएंगे, सेंटेंसेस के दरमियान भी, आइडियाज के दरमियान भी। कंजुगेटिव एडवर्ब्स लगाएं, जिस तरह देयरफॉर है, द सेम पे है, लाइकवाइज है। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रेसी में कनेक्टिविटी, सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी आ जाएगी। हर इररिलेवेंट आइडिया को आप ओमिट करें तो कनेक्टिविटी आ जाएगी। इसी तरह उसी सीक्वेंस को फॉलो करें जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल पैसेज लिखा गया है, उसी ऑर्डर को फॉलो करें, उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। जो सबसे पहले आइडिया एक्सप्लेन हुआ है, आपने भी अपनी प्रेसी में सबसे पहले उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है। आपकी प्रेसी मीनिंगफुल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी प्रेसी। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपने प्रेसी लिखनी है। अगर ओरिजिनल प्रेसी 3 पैराग्राफ में है, तब भी आपने उस सारे पैराग्राफ्स को मर्ज करना है, इंटरमिंगल करना है और उसको एक पैराग्राफ में आपने लिखना है। डायरेक्ट स्पीच में ना लिखे मींस ये है कि कोटेशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह कोटेशंस आपके प्रेसी में नहीं होने चाहिए। स्टोरीज 2 तरह के हैं, एक स्टार्ट से लेके लास्ट तक स्टोरी है तो उसको फिर लिखें। लेकिन अगर एक पैराग्राफ है और दरमियान में एक स्टोरी भी ऑथर ने इनकलकेट की है, इंजेक्ट किए हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट की है, तो आप उस स्टोरी को ओमिट करें। नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 तरह के एग्जांपल है, एक लिस्टेड एग्जांपल है, एक डिटेल्ड एग्जांपल है। लिस्ट दी गई है चीज के कि आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड दिस एंड दैट, एक पूरी लिस्ट दी गई है। आपने जस्ट लिखना है आई लाइक डिफरेंट फ्रूट। अगर एक डिटेल्ड एग्जांपल है कि इस्लामाबाद is my favorite city, Islamabad has got wide roads, it has got a famous mosque built by Faisal during his visit to Islamabad, this and that। ये मीन्स है कि डिटेल्ड इस्लामाबाद को एक्सप्लेन किया गया है, तो फिर आपने इस तरह एग्जांपल को लिखना है, कंप्लीटली ओमिट नहीं करना है। नेक्स्ट रिमार्क वो है, रिमार्क्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से क्या मतलब है कि जो वर्ड्स हैं, जिस तरह हुर्रा है, आउच है, ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, बाकी आइडिया आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हुर्रा, आई क्वालिफाइड सीएसएस, तो मैंने ये वर्ड हुर्रा नहीं लिखना है, बाकी मैंने जस्ट लिखना है कि द राइटर सेड दैट ही क्वालिफाइड सीएसएस। नेक्स्ट हमने एक्टिवाइज ट्राई करनी है कि मैंने एक्टिवाइज में लिखने हैं अपनी प्रेसी। नेक्स्ट ये है कि कोशिश करें, बल्कि ये रूल है, इस पे नो कंप्रोमाइज, कि आपने हमेशा से थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी कहीं पे नहीं होना चाहिए आपकी प्रेसी में, और यू वर्ड कहीं पे नहीं होना चाहिए। जस्ट ही, शी, इट में आपने या दे में आपने चेंज करना है इसको। फिर मैंने कहा कि सेम टेंस होना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आप भी प्रेजेंट टेंस में अपनी प्रेसी लिखे। ओरिजिनल पैसेज अगर पास्ट टेंस में है तो आप भी पास्ट टेंस में लिखे। स्टूडेंट्स एक चीज और जस्ट मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि इसका फायदा क्या है। प्रेसी राइट, व्हाई द एफपीएससी वांट यू पीपल टू मेक प्रैक्टिस ऑफ प्रेसी राइटिंग, क्यों ये आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपका एक पहले सीटीपी होता है, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप फॉर एग्जांपल पैस में चले गए, मान कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रहे हैं या आप पुलिस में जा रहे हैं, एएसपी बनने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको डिफरेंट टास्क दिया जाता है। ठीक है, आपका जब कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अटैच किया जाता है। ठीक है, तो वहां से आपको प्रैक्टिकली ये इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाएंगे। जब आप किसी फॉर एग्जांपल हमसे ये प्रैक्टिसेस करवाए भी गए थे व्हेन वी वर असिस्टेंट कमिश्नर यूटी अंडर ट्रेनिंग एसीज, जब हम थे तो उस टाइम इस तरह की प्रेसिस हमसे करवाए गए, इस तरह की एक्सरसाइजेस हमसे करवाए गए। फॉर एग्जांपल कहीं पे इवन उस दिन भी एक ट्रेजेडी हुई थी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो वहां पे एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो मुझे डीसी साहब ने कहा कि वहां पे आप जाएं और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें।
मैं वहां पे गया, वहां पे मैंने सारी फ्रॉम ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। मैंने ये देखा कि ये जो ट्रेजेडी हुई थी, क्या ये ह्यूमन डिलिबरेट एक्शन था या नहीं, ये एक डिजास्टर था। तो ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि वहां पे जो आई विटनेसेस थे वो कौन कौन थे, उनके उनके स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए। ठीक है। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देख ली कि पहली से पहले कभी इस तरह की ट्रेजेडी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें मटेरियल किस तरह का मटेरियल यूज हुआ था। ये वो मीन से है कि बीइंग एन असिस्टेंट कमिश्नर मैंने वो सारी की सारी डेटा जो था वो कलेक्ट की। ठीक है। कंप्लीट डेटा मैंने कलेक्ट की। उसके बाद जब मैंने डेटा देखा तो वो कोई 20 पेजेस तक एक्सटेंड हो गई। the data was extended to almost 20 pages। तो अभी डीसी के सामने मैंने वो सारे 20 पेजेस, तो इतना डिटेल से उनके पास ना टाइम होता है कि वो पूरा दिन बैठ के आपकी जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको रीड आउट करें। नो, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि उसको जस्ट 2 पेजेस में शॉर्ट करके, प्रिसाइज करके, कंसाइज करके मैंने उसको 2 पेजेस में डीसी के सामने रखा। तो ये है इसके प्रैक्टिकल पर्पस प्रेसी राइटिंग। इंशाल्लाह आप भी असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे कहीं पे या एएसपी बनेंगे तो आपसे ये करवाएंगे। बस ये कोई और नूर फातिमा है तो कुछ और डिबेट हो जाएगा। जस्ट मैंने प्रेसी राइटिंग के हवाले से बताना था कि इसका फायदा क्या है। तो ये तो चले मैंने परसों किया है, लेकिन जब मैं एसी यूटी था, अंडर ट्रेनिंग एसी था, तो इस तरह के काफी सारे एक्सरसाइजेस हमसे करवाए गए। ठीक है। समरी लिखना कि इस तरह शॉर्ट करके, प्रिसाइज करके आपने बात को कलेक्ट करना। तो दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्रेसी राइटिंग। स्टूडेंट्स इस तरह कर लेते हैं कि एक शॉर्ट सा ब्रेक कर लेते हैं 5 to 10 मिनट्स का। जस्ट आपने एग्जैक्ट 450 पे आना है वापस। ठीक है। 450 पे जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक है, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक है। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। ऑलमोस्ट लेक्चर थोड़ा सा रहता है और उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो प्रेसी राइटिंग प्रेसिस हैं उसको हम देखेंगे। तो यू हैव जस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं है आपके पास, जस्ट 5 मिनट्स से 450 से पहले आप लोगों ने वापस आना है प्लीज। सो बी बैक एट 450।